हरे कृष्णा। परम सौभाग्य नवरात्रि के We are extremely fortunate that during these pious festivities of Navratri festival, भगवत कथा का हम सब along श्रवण with कर रहे हैं। the glories of Sri Durga Mata, we are listening to the Shrimad Bhagavatam Katha as well. दुर्गा कौन है? So who is Durga? एक नया विचार, एक A new thought विशेष तत्व की चर्चा or a आज great हम करें। element to be discussed today. एक बहुत सुंदर प्रामाणिक ग्रंथ है, There is a beautiful scripture पंचरात्र, that is called Narad जिसे Pancharatrik, श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाणित किया। which has been ब्रह्म मध्व approved by Chaitanya Mahaprabhu. प्रभुपाद जी ने जिसे प्रमाणित किया, Even Srila Prabhupada has यहाँ तक कि approved it. संप्रदाय और इस संस्था में And भक्ति in के this जितने भी विधि विधान है, society, नारद that is पंचरात्र Iskcon, के अनुसार all the rituals चलते हैं। have been taken from Narad Pancharatrik system. यह प्रश्न किया गया, So in this Narad Pancharatrik book, it has been asked उसकी प्रामाणिकता आपके बीच में रखी। that who is Durga? So I already discussed that और श्रील प्रभुपाद जी the Narad Pancharatrika system, which have been followed by इस नारद पंचरात्र ग्रंथ में Srila Prabhupada and दुर्गा कौन? Brahma Madhika Gaudiya Parampara as well. So there was a question there that who is Durga, and according to the Narad Pancharatrika book, we are going to listen to what we haven't heard so far. जाना 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 तिये का पराकांता, जाना तिये का पराकांता, सैव दुर्गा तदात्मिका, या परा परमा शक्ति, महाविष्णु स्वरूपिणी, यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मनः मुरुहुता देव देवस्य प्राप्तिर्भवति नान्यथा, एकेयं प्रेम सर्वस्वा, एकेयं प्रेम सर्वस्व, भावा श्री गोकुलेश्वरी, यथा मुग्धं जगत् सर्वं, सर्वदेहाभिमानिनी। नारद पंचरात्रक। So from Narad Pancharatrak scripture, it was asked that who is Durga, Devi or goddess, and it has been replied in the same as follows. So we will try to
understand this verse word by word. सबसे पहले तो दुर्गा जी के विषय में कहते हैं First of all, it is said about Goddess Durga एक है, that मतलब as the Lord is करोड़ों में one, एक, जैसे उपनिषद कहती है, as it is एको mentioned in एवं Upanishads, अद्वितीय, that मतलब भगवान एक है, उसके जैसा Krishna छोटा is बड़ा और कोई unparalleled नहीं है। and there is ठीक no उसी other प्रकार दुर्गा like एक है, him. उसके जैसा Similarly, उसके समान और Goddess कोई Durga नहीं। is also one and there is no तो one similar जानाति or एका, parallel to her. वो एक, वो दुर्गा कौन है? पराकांता। And who is she? समझिए, एक एक Parakanta. शब्द समझिए, दुर्गा जी कौन है? So please listen पराकांता। and कांता माने प्रिया। try to understand carefully. Kanta means भगवान beloved. श्री कृष्ण की प्रिया में, अब कृष्ण की तो बहुत सारी प्रिया है, So कांता है, Krishna has many तो कृष्ण की अनेक lovers प्रिया or प्रेयसियों beloveds, में and जो amongst परा them माने जो सबसे उत्तम, the best, टॉप that मोस्ट, is Para, that is the topmost सबसे आगे, or the कृष्ण की foremost. प्रिया में जो सबसे परा है, परे है, सबसे उत्तम, So जो सबसे amongst श्रेष्ठ है, Krishna's beloveds, सैव the दुर्गा, one वही who is दुर्गा है। topmost or foremost is none बहुत other छोटी than बात है भक्तों। Durga. जानाति एका, पहले तो दुर्गा एक ही है, मतलब उसके जैसा So दूसरा for कोई नहीं। Janati फिर Eka आगे means कहते हैं she is पराकांता, unparalleled and कृष्ण there की is no one like कांताओं her. में, कृष्ण की And प्रियाओं then में जो सबसे Parakanta, पर माने the, अव्वल the नंबर, सबसे उत्तम है, topmost स एव beloved दुर्गा, of वही Lord Sri दुर्गा है। Krishna, कृष्ण की सबसे and उत्तम she प्रिया, is कृष्ण की जो Durga, परम प्रिया है, स who एव is the दुर्गा। beloved of इसे प्रमाण Lord के Sri साथ चल Krishna. रहा है। मैं बिना श्लोक के बोलता ना तो कई लोगों के पेट में दर्द होता, So I'm just लेकिन मैंने giving you the थोड़ा थोड़ा references, परिचय दे दिया, फिर संस्था में जो चल रहा है वो भी बता दिया, and I have और अब अर्थ समझिए, सीधा अर्थ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो shared with you तो the कृष्ण की scripture पराकांता, and परम the प्रिया, verse from where स I have एव taken दुर्गा, it. वही दुर्गा है। So अच्छा, कृष्ण की परम प्रिया पराकांता जो दुर्गा है, उसका और थोड़ा अधिक परिचय दीजिए। तो if we पहली लाइन want के to अंत में कहते हैं introduce her तद more आत्मिका। or give more information about her, दुर्गा कौन है? then it तद is आत्मिका, mentioned मतलब Tad कृष्णात्मिका, Atmika. मतलब कृष्ण की आत्मा है, So she is the soul मतलब of उसके बिना कृष्ण Lord Sri कृष्ण नहीं Krishna, है। and there is no one, कृष्ण बिल्कुल आधे हैं। and तो जानाति एका, जो हजारों करोड़ों में Krishna एक है, is half without her. पराकांता जो कृष्ण की परम So प्रिया है, she is तद unparalleled. आत्मिका जो She कृष्णात्मिका is है, कृष्ण की आत्मा the है। इतना ही नहीं, most दूसरी लाइन में beloved of या परा परमा Lord Sri शक्ति Krishna, महाविष्णु and स्वरूपिणी, she जो is पराशक्ति the है, soul वो of Lord भौतिक Sri शक्ति नहीं Krishna. है। And in the second line it पराशक्ति is माने said Para भौतिक संसार से Shakti. परे, That means she is not the अतीत शक्ति, material स्पिरिचुअल or एनर्जी। external तो potency of the या Lord, परा but परमा शक्ति internal potency of the Lord. That is the महाविष्णु स्वरूपिणी, transcendental और वो स्वयं spiritual महाविष्णु energy. की स्वरूपिणी, महाविष्णु की तरह ही महाविष्णु स्वरूपिणी है। So स she एव is, दुर्गा। she has a similar अब स form एव as दुर्गा सबके साथ Vishnu, लगेगा, और एक इसका अर्थ इस प्रकार से हो Vishnu सकता है, Swarupini. जो कृष्ण की परम प्रिया है, स एव दुर्गा, वही दुर्गा है। जो कृष्ण की आत्मा है, कृष्णात्मिका, स एव दुर्गा, वही दुर्गा है। या परा परमा शक्ति, जो स्पिरिचुअल एनर्जी, So the spiritual or transcendental energy and the topmost energy in this spiritual energy is Durga herself. And then Mahavishnu Swarupini means that she is the epitome of Vishnu or Mahavishnu. तीसरी लाइन में कहते हैं, So in the third ज्ञान line it मात्रेण, is mentioned, यदि इस दुर्गा को कोई समझ लेता है, if somebody is able to understand this Durga, जानना, Gyan लेकिन यहाँ is
to know, मात्रेण नहीं लिखा, तीसरी लाइन में, but it is not written Gyan यस्य Matrena. ज्ञान मात्रेण नहीं लिखा। आप थोड़ा बड़ा करके देखिए, यस्या विज्ञान मात्रेण It is mentioned पराणाम Vigyan परमात्मा। Matrena Paranam. यस्य विज्ञान मात्रेण, माने उस दुर्गा देवी को That means कोई जान that लेता है, जानता Goddess नहीं, Durga विज्ञान माने उसे जीवन में उतार is लेता है। no, not विज्ञान only माने just उसका known by a साक्षात्कार person, कर लेता है, but also realization कर imbibes लेता है। her or तो उस is दुर्गा real तत्व को self-realizes विज्ञान her. मात्रेण, रियलाइजेशन करने मात्र से That means पराणाम the परमात्मन, practical as well as वो the परम theoretical परमात्मा knowledge, भगवान श्री कृष्ण that is को, Vigyan. यस्य विज्ञान मात्रेण दुर्गा देवी को So a जानने मात्र person से who पराणाम completely परमात्मन, परम परमात्मा understands भगवान श्री her, कृष्ण को मुहूर्ताद एव, बिल्कुल क्षण भर में प्राप्ति Muhurta Deva प्राप्त कर लेता है। Praptir Bhavati. ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई जा रही है। आप ऊपर यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो नीचे आप देख सकते हो, ऊपर की जो दो लाइनें नीचे आपके लिए कितना कितना गोविंद टीवी करता है। How ऊपर much Govind TV is है थोड़ा सा, working hard for all of you. ये So सारे श्लोक एक these साथ में two, है नारद पंचरात्रक में, लेकिन उसमें से एक बीच वाली लाइन this दिखाई one देती है। verse क्या कहते हैं? is below यस्य here for your clear विज्ञानमात्रेण, understanding. जिस दुर्गा को So जानने the मात्र से goddess Durga, by क्या just होगा? knowing पराणाम her, परमात्मन, जो परमात्मा है, माने जो the परम परमात्मा Paramatma, है, भगवान श्री कृष्ण, that is Lord Shri परमात्मा माने Krishna. विष्णु समझ सकते हैं, लेकिन परम परमात्मा माने भगवान श्री कृष्ण Paramatma को is Lord Vishnu, but फिर here मुहूर्ताद एव Param क्षण भर में Paramatma, that ही is Lord Shri Krishna, प्राप्तिर भवति, प्राप्त कर लेता Praptir है। Bhavati. So within a few सो moments, a दुर्गा person माता will को कोई attain समझ ले, Lord Shri Krishna. उसका If somebody रियलाइजेशन कर is ले, कैसे self-realized वो or कृष्ण को प्राप्त कर realizes सकता है। Goddess Durga, और then फिर they अंत में can कहते हैं attain न अन्यथा, Lord Shri Krishna. इसके अलावा And कृष्ण को प्राप्त in करने का the और end, कोई it's उपाय mentioned नहीं है। Na Anyatha. That न means that there is अन्यथा, no other way to एक ही मार्ग attain है the Lord. कृष्ण को प्राप्त करने का, प्राप्तिर भवति, कृष्ण प्राप्तिर भवति, Praptir कैसे? Bhavati यस्य means विज्ञान मात्रेण, दुर्गा to माता attain को the Lord. समझकर उसका रियलाइजेशन करना, न अन्यथा, इसमें कोई By संशय नहीं है, understanding Goddess अन्य Durga, कोई उपाय नहीं है। theoretically and तो practically, ये है दुर्गा देवी की महिमा। a person can लेकिन attain actual Lord दुर्गा है Shri कौन? Krishna. तो But यहाँ who जनरल is में आप actual सेकंड लास्ट लाइन देख this, सकते हो, एके यम, this ये Durga? दुर्गा कौन It है? is mentioned in उसी बात को यहाँ the नीचे भी मैं दिखा दूं, वो जो एक verse जिसका below, जिक्र यहाँ ऊपर हुआ, Ekayam, the जिसका one नाम who is being दुर्गा है, discussed here, सदात्मिका है, जिसको whose जानने मात्र से name is कृष्ण की Durga प्राप्ति हो सकती है, and वो who is दुर्गा कौन है? unparalleled बोले and वह beloved of Lord एकयम, Shri वो Krishna, एकमात्र वो who is दुर्गा, Shri प्रेम सर्वस्व भावा। Prema वो Sarvasva प्रेम Bhava. सर्वस्व भाव माने वो महाभाव That स्वरूपा means है। और वह दुर्गा she एक्चुअली is कौन है? तो श्री the गोकुलेश्वरी love श्रीमती personified, राधा रानी ही and दुर्गा she है। is none other than श्रीमती Shri राधा रानी Gokuleshwari. ही, That is, she is no other than Srimati प्रमाण है Radha यहाँ Rani. पर। तो So that एकेयम, is ये the सारे reference श्लोक एक and साथ proof इसलिए here. रखे हैं ताकि आपको ये न लगे कि कहीं से तोड़ जोड़ कर ये सारी चर्चा हो रही है। ये ऊपर जो है ना वो नारद पंचरात तक के क्रम का श्लोक है, 1 2 3 So 4, और नीचे उसी बात को आप these verses are from Narad Pancharatrika book सो and एकेयम सर्व in the same स्वभावा, order. माने वो दुर्गा कौन है? महाभाव स्वरूपा श्री गोकुलेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। So she is none other than Srimati तो Radha फिर Rani यहाँ राधा herself. को दुर्गा क्यों कहा गया? So why Radha तो Rani यहाँ is इस mentioned श्लोक as के Durga प्रमाण here? बताते हैं, राधा It is रानी को दुर्गा mentioned इसलिए here कहते हैं क्योंकि राधा रानी को समझना बहुत मुश्किल she है। is राधा called को Durga समझना बड़ा because कठिन है। to understand Radha, Srimati Radharani तो is दुर्गम गमयति, extremely जिसको difficult. जानना बड़ा दुर्गम है, कठिन है, Durgam इसलिए Ayati राधा को means दुर्गा कहते हैं। a, which is very hard to understand. लेकिन
That is why she is परमेश्वरी श्रीमती called राधा रानी ही Durga. दुर्गा देवी है। और फिर अंतिम लाइन में आप देख लीजिए, And in the last यथा line of the verse, मुग्धम it जगत is है। mentioned Yatha श्रीमती राधा Mugdam रानी दुर्गा Jagata. है, जिस राधा से So कृष्ण वश she में होते is हैं, जो राधा कृष्ण की प्रेयसी, वो सारी बात सुनी। Radharani, अब who is उस the राधा beloved of रानी Lord का Shri स्वरूप आप Krishna and who देखिए, लास्ट controls लाइन में Krishna. कहते हैं, And in the यथा last line it is मुग्धम mentioned जगतम Yata Mugdam Jagata सर्वदेहाभिमानिना। Sarvam इस Dev जगत में Sarvadeha जो Abhimanina. देहाभिमानी आदमी है, जिसकी बुद्धि केवल शरीर में So लगी हुई a है, person जो who is आत्म तत्व को engrossed न जानता on न the bodily समझता है, platform and one who is beyond ऐसे लोग self-realization, such जिस दुर्गा person से, जिस राधा or रानी such से people मुग्ध हो जाते हैं, अर्थात इनकी अवतरणा get शक्ति confused महामाया है। by her, and that is माने Mahamaya. गोकुलेश्वरी श्रीमती राधा रानी ही So दुर्गा Shri है, Gokuleshwari और उस Radharani दुर्गा is का एक Goddess अवतार Durga herself, and महामाया her है। one form or कुल incarnation is मिलाकर Mahamaya. भगवान के धाम में श्रीमती So राधा in रानी the को ही abode of दुर्गा the कहा Lord, जाता है। Srimati Radharani is referred to और as वो श्रीमती Durga, राधा रानी का भगवान के and धाम that में वृंदावन में तो वो राधा Shri है, Radharani, who लेकिन is वही राधा Radharani अपने in अपने जगत Vrindavani, में रहने वाली श्रीमती राधा इस भौतिक जगत में when दुर्गा बनकर प्रकट होती है। in this material world she manifests as और Goddess इसका Durga. जिक्र, इसका प्रमाण और भी And एक शास्त्र में किया there is गया है। another reference of सम्मोहन the तंत्र same में in एक बार Sammohan दुर्गा Tantra. देवी को ही पूछा गया Durga कि Devi क्या herself क्या was कीजिए ना, asked, आप ही बता दीजिए ना, हु आर यू, आप कौन है। दुर्गा देवी को पूछा गया, सम्मोहन तंत्र में ये शास्त्र है so Durga Devi was कि asked आप कौन। in Sammohan तब Tantra दुर्गा herself देवी that who स्वयं are कहती you? है, And she यत herself नामना नामनी दुर्गा अहम, replies, जिनके नाम से in मैं Amna दुर्गा हूँ, Namnim Durgaham गुणेर गुणवती अहम, जिनके गुण Guner से मैं Gunvati गुणवती Aham. हूँ, यत वैभवत महालक्ष्मी, So जिनके the वैभव से one मैं from whose वैभवशालिनी हूँ, my name is राधा Durga and राधिका from whose पराद्वयी, qualities उस राधा का मैं I अंश have, हूँ, उस and राधा का मैं अवतार हूँ। I am the part or माने incarnation इस of भौतिक जगत में that जो Srimati दुर्गा देवी Radharani. है, So the वो आध्यात्मिक Durga जगत में रहने Devi वाली of the श्रीमती material राधा रानी का world अवतार है। is an incarnation of तो Srimati आध्यात्मिक जगत में Radharani. श्रीमती राधा, जिसके So in करोड़ों spiritual रूप हैं, world, उनमें she is से एक नाम है Radharani, दुर्गा। who तो has उस श्रीमती राधा रानी का millions of अवतार names, and out भौतिक of जगत में those भी names, दुर्गा her name is प्रयुक्त Durga, होता है। and she manifests in this material universe as और इस Shri बात को Durga और एक Devi. शास्त्र के प्रमाण के साथ कहूं, And there is one more बृहद reference गौतमीय तंत्र, in Brahad जिसको हम वैष्णव Gautamiya समाज Tantra, प्रमाणित मानते हैं, which is तो approved by the गौतमीय तंत्र Vaishnavas. में बताया गया कि देवी It is कृष्ण mentioned मई प्रोक्ता, Devi Krishna भगवान Mai श्री कृष्ण Prokta, जैसे सभी अवतारों के मूल है। as ध्यान से Krishna सुनिएगा, is the root of चाहे नरसिंह all वामन वरा the के incarnations अवतार, like चाहे Narsingh, चाहे Vaman, देवता, Vara, चाहे and all गंधर्व the किन्नर, demigods, जैसे इस Gandharva, संसार Kinnar, में सभी etc. जीवों के मूल कृष्ण As है, he is the root of वैसे every सभी living शक्ति entity, के मूल similarly, श्रीमती राधा रानी है। the root of all the तो energies देवी of the Lord कृष्ण is मई Srimati प्रोक्ता Radharani. राधिका पर देवता, Devi Krishna Mai Prokta, अवतारों के मूल Radhika कृष्ण है, Paradevata. So the root देवताओं of के all the मूल कृष्ण demigods है, तो is Lord देवियों Shri के Krishna. मूल So श्रीमती the राधा root रानी of है। all the goddesses is जैसे कृष्ण Srimati में से सारे Radharani. अवतार होते हैं, वैसे राधा As में से all the सारी शक्ति incarnations और manifest from देवियों का Lord Shri जन्म लेता है। Krishna, similarly all the goddesses जैसे भगवान श्री कृष्ण से राम प्रकट हुए तो incarnate राधा से from सीता जी Srimati प्रकट हुई, Radharani. कृष्ण से नारायण प्रकट हुए तो राधा रानी से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, कृष्ण से शिव जी So प्रकट हुए तो Krish, राधा रानी से Shivji दुर्गा manifested देवी प्रकट हो गई। from तो Krishna and कृष्ण Durga के Devi जैसे manifested अवतार, from ध्यान Srimati से देखिए, Radharani, गौतमीय तंत्र में as कहते हैं कि Vishnu देवी manifested कृष्ण from मई Lord Shri प्रोक्ता, Krishna and जैसे कृष्ण Lakshmi है manifested वैसे from ही Srimati श्रीमती राधा Radharani. रानी है। जैसे कृष्ण अवतार लेते हैं, वैसे राधा भी अनेकों अवतार लेती है। So as Shri Krishna जैसे takes many कृष्ण forms and नरसिंह वामन incarnates वराह in बनकर many आते हैं, forms, वैसे राधा similarly सीता Srimati Radha रुक्मिणी लक्ष्मी Rani और दुर्गा also बनकर आती हैं।
takes certain incarnations and forms. And there is another reference in Matsya Puran. I studied almost half of Matsya Puran, then I was able to locate this verse. So in Matsya Puran, this verse is mentioned, which can make it more clear to you very easily. Lakshmi Vimala Purushottame Varanasya Vishalakshmi Vimala Purushottame Rukmani tu Dwarvatiyam Rukmani tu Dwarvatiyam Radha Vrindavane Vane Radha Vrindavane Vane. So Radha Vrindavane Vane. So Radha Vrindavane Vane, the one who resides in Vrindavan, is in Varanasi or Kashi as Vishalakshi. This is the verse from Matsya Puran. So the Radharani that resides in Vrindavan is residing in Varanasi or Kashi as Vishalakshi. And in Purushottam Kshetra, that is Jagannath Puri, she manifested as Vimla Devi. And in Dwarika, she manifested as Srimati Rukmani Devi. As one Krishna takes many forms and incarnations, similarly, Srimati Radharani takes all these forms and incarnations. So, there are innumerous forms of Lord Sri Krishna. Similarly, there are innumerous forms of Srimati Radharani. And for some particular work to be performed, she manifests as Durga Devi. And in spiritual world, Srimati Radharani is Durga herself. But for some particular work, she manifests as different energy and manifests as Goddess Durga. So there might be a question that Srimati Radharani is always engrossed in loving Lord Sri Krishna. But for such particular work, she manifests as a different energy and manifests as Srimati Durga Devi. So which energy is that? And what is that particular work? And how she works in this material universe. We will listen to all this, but before that, with love, let's start with dancing and Sankirtan, and we will start with Shrimad Bhagavatam Katha. Please stand, and with love, excitement and zeal, let's start with dancing. We will celebrate this. Jaya Jaya Navala Kishore Jaya Gopi Chit Chora Prabhu Jaya Gopi Chit Chora Prabhu Jaya Jaya Makhan Chor Jaya Jaya Makhan Chor. Shri Krishna Chandra Bhagavan ki, Shri Durga Mata ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki.
कृष्णा माता के साथ मैचिंग हो गया है आज। यजमान के साथ मेरे कपड़ों का मैचिंग है आज। बोलो इंच पिंच करूं छापड़े। So उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Krishna, I welcome all the loving devotees of Shrimad Bhagavatam, all the devotees, and I would love to extend my warm welcome to the senior devotees of International Society of Krishna Consciousness in Iskcon. I also welcome all who have gathered here through the medium of YouTube, Facebook, etc. in huge numbers who are listening this Bhagavatam Katha, that is all the listeners, and with their loving heart, the organizers of this beautiful Katha, the residents of New Jersey, Dr. Madhuben Patel, Dr. Jayanti Bhai Patel, and their three daughters, Dr. Krishna Patel and Deepak Bhai, Aditi, Ben, Janki and Maulik Javeri, and all the kids, Shiv Kripa, Satya, Devaja, Kirtan. I welcome you all on the third day of this Bhagavatam Katha, and please accept our humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. कथा क्या चल रही है? Katha. So what's going on? Katha. कथा का अर्थ क्या है? What does Katha means? वैसे आचार्यों ने, संतों ने, Sages and saints, and according to the grammar, there are quite a few meanings of Katha. एक दिन मैं फ्लाइट से इंडिया जा रहा था, Once I was going or traveling from US to India, and I was thinking that what will us contemplate. So by the time my flight reached, I got 21 meanings of Katha, and I thought that I will discuss it with you all someday. But let me discuss only just one meaning of Katha. Ka, or the K alphabet, denotes Sukh, that is happiness. So according to Sanskrit grammar, Ka has many meanings. It is referred to as Brahma and the lotus flower as well. And out of those, one is Sukh or happiness. And Tha means Sthapayeti, that is to establish. So where the happiness is established is called Katha. So the living entities who are always engrossed in the fire of this material existence, as Sri Chakravarti Pad writes, Sansar Dava Nalalida Loka, it means that every living entity is burning in the fire of the forest. Similarly, lust, envy, anger, etc., and that too in the age of quarrel and hypocrisy, so this fire is persistent and it's everywhere. People think that if you travel from India to UK, you will be saved, and vice versa.
In Gujarati, it is said that all the grays are black, whether it is from India, UK, or US. They're all same. Somebody has physical affliction and the others are mentally depleted. So some have everything, yet they don't have satisfaction. Day in and day night, day out, our heart burns with all the comfort we have established, air conditioners, etc. Yet our heart keeps on burning. But in this situation, where the whole world is on fire, if we get an opportunity to listen to Katha, then Katha means happiness that is established. So the thing that establishes us in happiness, that is called Katha. And by just seeing all of you, I just remember one more thing. During the pastime of churning of the ocean, milk ocean, all the demigods gathered in front of Lord Vishnu and prayed or venerated Lord Sri Vishnu. And when Lord Vishnu manifested, then demigods told the Lord that we are getting so much happiness by just seeing you. We cannot express in the words. So the happiness that we get by listening to the pastimes of the Lord, it cannot be expressed in words. But if we want to express or want to say, then I can give you a reference that how much happiness we get by just seeing you. As if there is a forest fire and a huge elephant gets entrapped in the same forest fire. So a bird could fly, but elephant cannot. He cannot fly. So if he runs everywhere, he is surrounded by the fire, and our situation is similar to that elephant. We try to resolve one issue, and there are another 10 standing for us. So everywhere there is a forest fire, and this elephant is entrapped. And while running, if he sees Mother Ganga or River Ganga, then imagine his happiness. And if he jumps in Ganga Ji, then he will be relieved of this fire because of the coldness of Ganga Ji, and the similar happiness we get while listening to the Katha. If a person is traveling and he finds cold water, so this Katha is similar to that. And such Katha is flowing, and we are all getting benefited. Today, in the beginning of the Katha or the pastimes of the Lord, I just want to remind you that in India or Bharat, our Nartaki Shiromani Mata, that is Nalini Mataji, who is a regular listener in Bhagvatam Katha, and we have association with her for a long time. And on Sunday of Bharat, around 9:30, her husband Prabhakar Panditji left his body. So nobody knows
the flow of life or our deeds. In Bhagavad Gita, Krishna says that, and where we go after we die, we all are unaware. But if we if we take a reference from the scriptures, and so in this, if we take the reference from the scriptures, and during the Navratri, and this night time is more auspicious, and Nalini Mataji's husband at the night, he left his body during the Navratri, is auspicious. So he might have gone to a better place. So let's all pray to the Lord that Prabhakar Panditji get great place, and please God give her energy to undergo this pain, so that Lord give her energy. She has a good husband, son, and she always be able to do bhakti and serve her Guru Maharaj, Sri Radhanath Goswami, and may it be her last birth. That is our request. So we will all chant Mahamantra mantra and pay our respects to Sri Prabhakar Panditji. Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. अंतिम बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री वैष्णव ठाकुर की जय. वैसे एक दृष्टि से तो अच्छा ही है कि भौतिक जगत को छोड़कर कहीं अध्यात्म. In one sense, it is good that after leaving this material universe, is left for the spiritual abode, because this material world is not worth living. We're just trying to pass our time, somehow doing some devotional service, manifest the love of the Lord and Godhead. And our actual position is the eternal abode of the Lord, that is Goloka. So this place where we are situated is like, what? While we are traveling from Mumbai to India, Mumbai to Delhi, or US to India, so we all are travelers. And people come and go, and there is nothing stable here. We cannot take, we never bought any seat. So the essence is that the human life is that whatever time we got, we should try to use it in pure devotional service towards the Lord, by working for others, for listening to the Katha, chanting the holy names, Sankirtan, etc. Even animals live for themselves, but if we are able to help someone else, that is the actual benefit of this human body. So today is the third day of Shrimad Bhagavatam Katha, and we are sitting in association of Shrimad Bhagavatam and listening or discussing the Navratri. So till now we have discussed 2 days of Navratri. So on the third day, now that you have heard that Srimati Durga Devi is none other than Srimati Radharani,
So the third day of Navratri, दुर्गा देवी के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है. her Chandraghanta form श्री is चंद्र घंटा माता venerated की. or worshipped. ये दुर्गा माता का तीसरा स्वरूप है. So she is the और third नवरात्र form के or तीसरे दिन incarnation, दुर्गा and माता she is के worshipped इस on the third day. चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा साधक गण करते हैं. इनका रूप कैसा है आप And चित्र her में देख form सकते you हैं. can see in the image in चंद्र front of घंटा your माता screen. का रूप जो है बड़ा शांतिदायक है. She is very चंद्र peaceful घंटा माता का जो रूप है बड़ा कल्याणकारी माना गया है. and very इनके रूप auspicious में एक विशेषता and ये है beneficial. कि इनके The मस्तक पर glory of her अंगूठे face के is that आकार का on her अर्धचंद्र face का चिन्ह है. there is half moon, और इसलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है. and that is why she is called Chandraghanta. ऐसा कहते हैं कि It इनके is said मस्तक पर वो जो on her वीणा का forehead बेल घंट होता है that there is the bell. उनकी ध्वनि से By that बड़े-बड़े sound or दैत्य vibration, दानव डर demigods, जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं. oh, बड़े-बड़े demons राक्षस कांपने लगते हैं. shiver with fear. She instills fear चंद्रघंटा in माता के demons. शरीर का रंग आप निकट से देखिए. If you see, तपाए हुए सोने के समान चमचम चमचम she चमकता. looks like the burning जैसे gold, श्रीमती राधा and रानी she is का रूप effulgent है. like Srimati ऐसे तपाए Radharani. हुए सोने के समान चमकीला वर्ण है. और माँ चंद्रघंटा सिंह के ऊपर सवार है. And she सिंह rides वाहिनी. a lion, and she is referred जिस to चित्रकार ने as ये Singh फोटो बनाया Vahini. है लगता है कि ये सिंह बहुत दूर से चलकर आया है इसलिए थोड़ा टाटोडिया वाली गयो है थोड़ा बैठ गया है. It seems that this सिंह थोड़ा सा ऐसे lion बैठ is होता है लेकिन tired. मतलब ढीला पड़ गया है. कहीं दूर से यात्रा करके मतलब हम लोग न्यू जर्सी He में might have तो ये traveled सिंह जो है ना भारत से बेचारा a lot. चलते 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 अमेरिका पहुंचा है. बेचारा 25-30 घंटे चलकर आया है इसलिए थोड़ा ढीला पड़ गया है. It looks like little weak. So we should offer him some food. आप सिंह को देखकर चिंता मत कीजिएगा. है ना આમ તમને નથી લાગતો થોડો ઢીલો નથી પડી ગયો? આ તમે જુઓ थोड़ा सा ढीला लग रहा है कि नहीं? तो Don't you feel that this lion is quite weak? પણ સિંહને હું આમ યાદ કરું એટલે મને પાછું મને મારી ઓલી ગુજરાતીની ઓલી બે લાઈન યાદ આવી જાય. When I remember this lion, then ન કરે અને કોઈ પો પાછો કદી ન ફરે કાંપો તે મરે કે બીજાને મારે કાંપો તે મરે કે બીજાને મારે ઈ પાછા પગલા ભરતો નથી માં રગ છે શુરાપુરાનો માં રગ છે શુરાપુરાનો એમાં કાયર નરના કામ નથી માં રગ છે शुरापुरानो. भक्ति का मार्ग जो है ना शूरवीरों so का I है. remember this line that this performing pure devotional service toward the Lord is the work of brave hearts. The devotees always in excitement and always zealous. So Chandraghanta rides on the lion and is called Singh Vahini. And why is she riding a lion? So we get a teaching from there. We'll listen it shortly. So her face is peaceful. Let me describe her. And she has this half moon face, and she is effulgent like
the melted gold, and she wears red color sari. She has 10 arms, and out of those, in 8 arms, she has all the weapons, and the rest too, she has chanting beads and kamandal. Have you ever noticed this? That she has the chanting beads. The goddesses have not left the chanting beads, but they all have sung the glories of chanting, if we are able to understand. And the image is how? As if she is ready to go to the battle, waiting for the conch shell to start, and she can start fighting. So she's offered milk, or the milk products are offered to her, and she is offered the same. And if someone worships her, then what is the benefit? That person is relieved of all the 3 modes of 3 material disturbances and distresses. That is Adi Devik, Adi Bhautik, and Adi Adhyatmik. That is the problems and distress of our mind, the demigods, or other living entities. So she has a beautiful pranam mantra. It is mentioned in the pranam mantra. Kiryuta prasadam tanute mahiyam chandra ghante vishruta. पिंडज प्रवरा रुड्ढा. Pindaj pravara ruddha means she is riding a lion, and she is upset on the warriors or Kshatriyas. She has weapons in all her hands, and let she be merciful on me, such Chandraghanta, I bow down numerous times. So this is the exterior or outer form of goddess Chandraghanta. But if we want to understand her in element form, then her element form is this. And she is venerated on the 3rd day, and she personified Smaran, that is remembrance, and Bhajan Kriya, the process of singing the glories of the Lord. Chandraghanta Mata Smaran. So, Chandraghanta Mata or goddess is epitome of remembering and bhajan kriya. So she personifies Smaran Bhakti, that is remembering the Lord. So there are 2 words, Chandra and Ghanta. So there is a bell in the temple, that is Ghanta. And to understand her, we need to understand this in detail. We just understand from the outer form. But if we have to understand, then we need to understand the Chandra and Ghanta, that is the bell. So from Bhagavatam, we need to understand who is the moon.
or Chandrama. So he is the presiding deity of our heart. So moon signifies our heart. And if we ask you a question, is moon constant? He is never constant. He keeps on changing forms. Sometimes it depletes and sometimes it increases. Sometimes it wanes, and he is the presiding deity of our heart. When moon itself is not constant, then how can his disciple be constant? So he is the one who gives energy to our heart. So he himself is not constant, then how can we be constant? That is why our heart never stays fixed, as the moon is never fixed. And this is what we're discussing about Chandraghanta. Nobody has contemplated on her. They have never thought of these subtle things. That is why in Bhagavad Gita, Krishna had to say that a person who is entangled in desire and greed, they go and take the shelter of demigods. So we should take the shelter of the demigods with caution. As the moon is not constant, similarly, our mind also wanes. That is, we get overwhelmed with negative emotions and thoughts. Sometimes people are so negative. No matter what you tell, if you tell that, let's read the Bhagavad Gita, no, we won't understand. They're so pessimistic. They quit before even starting. We should not sit even with them, next to them. It's better to sit on the floor than to sit next to them. So sometimes the mind is negative and sometimes it's optimistic and it becomes overconfident. Then also we can face tribulation and distress. Sometimes we are so much overwhelmed in pure devotional service that we should leave everything and shift to Vrindavan. And sometimes it so happens that today I don't want to chant or don't want to listen to the Bhagavatam Katha. As the moon decreases and increases or wanes, similarly our heart also changes its position. So how can we be relieved of this problem of our heart? So sometimes people think that we will leave our home and go to the forest. Srila Prabhupada ji says that you leave your home, family, wife, children, but we are taking our heart with us and we are unable to leave it behind us. It always follows us. It is like our shadow and it always follows us or walks with us. In our whole body, after the soul, the most important element is heart. Even if you lose everything in your body, you should not be worried. But you should never lose heart, because this heart, if it's in place, it can take you to the eternal abode of the Lord. That is why Upanishad says
बांधाई विषया संगे निर्मुक्त विषय मन। मन ही मनुष्य के लिए बंधन का that कारण है, the मन ही mind मनुष्य के लिए मुक्ति or का कारण heart है। can मन be the यदि reason कंट्रोल for हो गया, our मन वश में हो entanglement गया तो or मुक्ति, our और liberation. मन को कंट्रोल If नहीं it's कर पाए controlled, then तो liberation. नरक, But if तो it's बंधन। uncontrolled, then we will be in the कबीरदास जी ने bondage. इसी बात को सरल भाव में Kabir कहा, Das ji मन said के in हारे simple हार words, है, मन के हारे मन हार के है, जीते जीत। मन के जीते जीत. मन को हार गए तो पूरी दुनिया A हार person गए। who loses अगर hopes केवल एक loses मन को everything. जीत लिया But ना, if a तो person पूरी wins दुनिया के his heart, बादशाह हो गए। he can win the whole world मन जीत लिया, or मन rule the whole मिलावत world. हरि से, ये मन ही हरि से मिलाता है। This और heart मन करत can फजीत, और फजीयत भी ये मन ही entangle करता us and it can make us है। meet बहुत the बड़ी Lord. चीज है मन। लेकिन क्या करे, सब कुछ वश में होता है, So, but the मन ही problem वश is में that नहीं होता। we are इसीलिए फिर able हम to लोग ताली control बजा कर गाते हैं, everything, मेरा yet मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे। कोल्ड कॉफी पीन हुई जा તારું મન ચંચળ જ હોય ને ભજન ન થતું હોય તો પછી ગરમ દૂધ, કોફી તો આપણે ન પીવાય, ગરમ દૂધ પીને હુઈ જા। मन बड़ा चंचल, ये भी एक so एक्सक्यूज this है, my बहाना heart है is कि मेरा मन बड़ा very चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, इसलिए प्रभु भजन करने का very प्रोग्राम ही कैंसिल रखा। प्रेमिला so माता रोटली થઈ ગઈ ને, there તો તમે રોટલી કરતા હતા, ઘી લગાડજો અમારા જગદીશભાઈ માટે। so there is a अब देखो saying मेरी that कथा कहाँ कहाँ the काम में आती mind है। कुछ लोग रोटली cannot बना be रहे हैं, कुछ controlled. लोग That सो is why रहे हैं, we are not able to सब लोग मतलब अपने अपने कार्य में काम कथा को worship यूज you. करते हैं। खैर, मैं मन की चर्चा कर रहा था। So I was भगवत गीता में talking about कृष्ण ने मन पर the जितना mind जोर दिया, and the उतना किसी भी focus बात of पर Lord नहीं Shri दिया। Krishna in Bhagavad Gita एक बार, has दो बार, is तीन बार, on nothing बार else. बार कृष्ण ने एक ही चीज कही अर्जुन से कि Lord Shri अर्जुन Krishna has said मुझे कुछ नहीं repeatedly to चाहिए। Arjun, I don't want मन anything. मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु। अपना मन मुझ में लगाओ, मई एवं मन That please आधत्स्व, focus मयि your बुद्धि निवेशय, mind अपना on मन me मुझको दे दो। and give your मन mind मना, to एक me. बार नहीं, दो बार Man नहीं। mana mad bhakta. He said it कृष्ण कहता जी twice. તમને एक बात कहूं, कोई ने कहता नहीं तुम्हें, एक सीक्रेट बात છે। So let me આ share ભગવાન one શ્રી secret with કૃષ્ણએ you. ગીતામાં વારંવાર એમ કેમ કીધું Why કે Krishna મને told મન આપ, repeatedly મન that આપ। you should give your अर्जुन heart to पूछता me. कृष्ण धीरे To से, किसी को पता न चले कि आप ये बार बार भीख so क्यों मांग रहे हैं कि मन दे दो, मन Arjun दे दो। asked, why कृष्ण you're कहता asking it अर्जुन again and मेरे again? पास सब But कुछ है, Krishna said मन that ही नहीं I है। have everything, but I don't have a बोले heart. कृष्ण तुम्हारा मन कहाँ चला गया? बोले So मेरा where मन is your राधा heart? रानी लेकर चली My गई heart है। is with Srimati मैं खाली Radharani. मन वाला हो गया हूँ। इसलिए हे मनुष्यों, हे दुनिया So, के लोगों, मुझे oh, कोई अपना मन दे दो, मन दे दो। people of this world, please give me your heart. और एक चीज लास्ट में, भगवान को देने के लिए हमारे पास So, one more thing. यदि So, कुछ है to give तो केवल something to the मन Lord, है। the only thing that we can give दो is पांच our डॉलर देकर heart. हम कहें कि प्रभु मैंने आपको If we बहुत give डोनेशन some दिया, उससे money कोई and we फल say that नहीं we do मिलता। some donation, या so फूल whatever लाकर He भगवान को दिया तो फल gave, तो we दो, gave it अपना to. फूल भी So the भगवान को fruits दे। and flowers, everything आप is कुछ provided भी by the भगवान Lord को Himself. दोगे तो तेरा तुझको Whatever we अर्पण। give to the लेकिन Lord, ठोक बजाकर डंके but की चोट पर यदि कहा जाए कि प्रभु if ये we have to मेरा say है with और surety मैं that this आपको is चढ़ाता mine हूँ, and तो I वो एक ही offer it चीज to है you, और that वो is है the only मन। thing, that is our heart हम बिल्कुल ठोस and बनकर mind. कह सकते हैं कि प्रभु, हम ऐसा नहीं कहते ये पैसा मेरा है, वो तो भगवान ईशावास्य We इदं सर्वम सब cannot भगवान say का that the है। wealth is ours, लेकिन मन के जो विचार है but वो our तो अपना thoughts अपना are भाषा our માંગ own. विचार कहवाય। चित्त जो है कृष्ण मेरा है, And that chit, और that मेरी is जो mind चंचल and मैं आपको intellect, आज से is दे our, रहा हूँ, ये and है that मन। I offer it to you. सो कुल मिलाकर हम तो चंद्र घंटा माता के पास है, माता जी से दूर नहीं जाना, नवरात्रि चल रही है, ठीक है।
तो चंद्र घंटा माता के मस्तक So पर चंद्रमा है she has this और Chandrama or moon मन की on her प्रतिमा face. की मन, And we were discussing चंद्रमा about मन सो the देवता, मन के देवता चंद्रमा है। moon and और the आधा heart. चंद्रमा, चंद्र घंटा माता क्या कह रही है कि आधा चंद्रमा माने हमारा मन भी आधा फाधा भक्ति में लगता है, And the पूरा नहीं लगता है। half moon signifies that we क्या cannot करें? fully concentrate our heart on चंद्र the के Lord. साथ घंटा है, घंटा माने मंदिर But में जो with बेल that, होता है ना, there is a ghanta, that is the अब bell घंटे की महिमा of the आप temple. देखिए। So let me tell the आप कभी glory मंदिर में of गए हो, this शिव bell. जी के मंदिर में तो Have खास you होता gone है, to the temple? राधा कृष्ण के मंदिर में, माता जी के So, मंदिर में बेल होता है, घंटा होता है। so mostly there जो is a उत्साही bell in the devotee होते temple. हैं ना मेरे जैसे, And an वो overwhelmed बड़े जोर devotee of से the Lord, बजाते हैं। हम they, लोग सोचते हैं कि तो जोर से बजेगा तो उनके कान में आवाज जाएगी that कि we बंदा should. आया है। तो जो ढीले ढाले होते हैं So वो an सिंह जैसे overwhelmed हैं, सिंह devotee अपने always. ये बेचारा बैठ गया है, बेचारो धरबाई गयो છે આ સિંહ ને, આ સિંહ મને આમ So જોતા it, મને કંઈક થાય છે, આને હું ખવડાવું કંઈક so થોડું it ઘણું। raises. खैर, So the लेकिन जो overwhelmed ढीले devotee होते हैं rings the bell टंग very टंग बजा loudly. देते हैं, But some लेकिन who जो are उत्साही devotee होते हैं ना not वो that थोड़ा जोर से overwhelmed, उसे they मारते just हैं। do it लेकिन with आपने मार्क very किया होगा slow और नहीं voice. किया तो अब But कल you might have कीजिएगा marked. कि And if मंदिर के not, घंट then को you आप should mark धीरे it से down बजाओ, जोर से बजाओ that या उस पर टंग जाओ, no आवाज जो है matter ना वो whether शंख के you समान निकलती है। आप ring the कितना भी bell जोर से बजाओ with या loudly धीरे से बजाओ, उसकी आवाज, उसकी or लय, slowly, उसके सुर but में the कोई voice फर्क will नहीं be पड़ता, कोई same. फर्क नहीं पड़ता। There is no कभी difference. एक्सपेरिमेंट किया है? આમ કથા સાંભળો તો તમને આ બધું ખબર પડે ને, નકર તો ભલે ઘંટ બજા के आ If you जाते listen हैं। to the katha, then only you वहाँ पे will ये सब understand. दीवा बत्ती होगा। हाँ? अब आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। हाँ? So एक्सपेरिमेंट you should now कीजिए experiment कि this. मंदिर के उस घंट को आप कितना भी जोर से बजाओ, धीरे से बजाओ, उसका No जो matter सुर how है, hard आप अपने मोबाइल में you आजकल तो ऐप press होती है, the ring, स्केल uh, सुर चेक करने की, slowly वो सेम you ring. सुर में बजेगा, So you can कितना भी आप जोर से check the बजाओ। scale and you will उसका understand डिसिबल that भी जो है ना वो the ज्यादा voice फर्क नहीं remains पड़ेगा, same. उसका आवाज, वॉल्यूम सब The सेम रहेगा, volume, the tone is वो भी similar. एक घंट की ध्वनि समान होगी। तो चंद्र घंटा, ये चंद्र घंटा माता जो है हमें क्या बताना चाहती है? So what does she wants कि to हमारा मन चंद्रमा के समान अस्थिर reveal है, to us? That our लेकिन mind घंट is जो है मंदिर का unstable वो like परम स्थिर this है। moon, but छोटा this बजाए, बड़ा bell बजाए, धीरे is बजाए, जोर से बजाए, कैसे भी बजाए, constant. ध्वनि No एक matter समान how निकलती hard है। or slow you ring it, but the voice is तो similar. चंद्र घंटा माता अपने इस स्वरूप से ये उपदेश दे रही So है with this form, कि she मन is को signifying स्थिर करना चाहिए, और मन को that स्थिर we should कैसे कैसे होगा? fix यहाँ our पर आप देख heart. सकते हैं, And how स्मरण are we करने going to से। fix our heart? That is by smaran यदि or मन में remembering भगवान the का Lord. स्मरण हो If we तो have दुनिया remembrance में of the कितना Lord भी in our उथल heart, पुथल हो जाए, then no matter whatever आपको कोई distress and फर्क नहीं obstacles पड़ेगा। are there in this material हमें universe, you will चंद्रमा never be को घंटे disturbed. के समान बना लो, So we अपने should मन make को our heart like the स्थिर bell. कर लो, भगवान में लगा लो, We should fix तो our दुनिया में heart कुछ भी हो in the जाए Lord, आपके जीवन में कोई and फर्क then नहीं no पड़ेगा। matter what happens, you will never be फिर वो घंट distressed. को कोई जोर से बजाए, धीरे से बजाए, टंग जाए, कुछ भी करे, And वो no एक स्थिर, matter एक how समान रहता है। someone ठीक rings इसी it प्रकार hard, मन यदि हरि slowly में लग or गया, मन harshly, यदि but भगवान if के we स्मरण are में लग fixed गया, in Lord दुनिया में Hari's कुछ भी हो जाए remembrance, आपको कोई फर्क नहीं then पड़ेगा। you will ये बहुत not बड़ी be बात है। afflicted. संसार And it जहां is पर a एक और झुलस great रहा है, बाहर से achievement. अनेकों The whole प्रकार world की is प्रॉब्लम और burning तकलीफ में है, with all types of लेकिन distresses and चंद्र घंटा problems. माता जो है But वे हमें Chandraghanta सिखाती है Mata कि मन में is हरि का teaching us स्मरण करें that और संसार की we should समस्त always दोष remember दुर्गुण से हम Krishna मुक्त हो जाए। and relieve ourselves from all the distresses तो स्मरण and disturbance of this चंद्र घंटा material माता world. से So स्मरण we should भक्ति का remember ये that is सिद्धांत what we प्राप्त should होता learn है। from her. And we get this philosophical स्मरण point करने की from her. परिपाटी कैसी है, स्मरण कैसे करना चाहिए, So how should we remember? आज एलेबरेट करेंगे। So let me elaborate the same स्मरण today. का सीधा अर्थ है किसी So वस्तु का remembering अपने means मन के द्वारा अनुसंधान,
to take association of someone or some subject through our mind. But remember, we can only remember when we have listened carefully and have done kirtan. That is why the philosophy behind remembering is we need to remember, but we cannot leave listening or kirtan, that is chanting of the holy name. So if we try to stop chanting or listening to the katha and thinking to remember, it's not going to happen. It's impossible to achieve. Therefore, the foundation of remembrance is Shravan, that is listening, and Kirtan, that is chanting. So, if you have heard something about Krishna, then only you can remember. If you haven't, then how you are going to? If you haven't heard, then how can you remember? That is why some people they think about impersonal Brahman. That if they had heard about the pastime of the Lord, then they would have at least seen some form or could contemplate on. So they think that, and they say that we meditate on the lamb. So it's better to sleep than that, and you will get good sleep, and your mind will be refreshed. And it's not that I am saying this, it is what Krishna himself has spoken in Shrimad Bhagavatam. He says that a person who wants to meditate on the impersonal form will not be relieved. So if we have to fixate our mind, then we should remember the Lord. And how? Without foregoing remembrance, listening and chanting of the holy names of the Lord. So there is a sequence of remembrance as well. First of all, we should remember the names of the Lord. We should not directly focus on the pastimes of the Lord. It will be considered as Sahajya. So first of all, we should remember the names of the Lord in our heart. So we should remember that word, the Mahamantra. So we should remember each and every word of the Mahamantra. So in this manner, we should remember the name of the Lord. When this becomes fixed, then we should remember the form of the Lord, that how beautiful Krishna is. And after that, the qualities of the Lord should be remembered. And after that, then we should remember the associates of the Lord, like Nand, Yashoda, etc. And finally, our form, the form that has been given to us by our Guru Maharaj. According to that, we should remember the pastimes of the Lord. These are the stages of remembering. The remembering is of 5 times. Smaran doesn't mean just to think about in our mind. Our sages and saints have discussed even the subtle things in great detail. So there are 5 types of remembrance as well. First is just to remember, that is the basic. So I'm starting from the below. So first is just remembering in that you're traveling and you're sitting and your eyes are closed, and whatever thought you got, you remembered. That's it.
That is general remembrance that we sometimes do. And that also we are not doing it properly. But upper, so the upper level of the same is dharana rupi smaran. That is to attract. So the first one was basic that we do. Okay. But in dharana, what happens is we have to work hard. So we focus our mind from every other thing and focus on the name, form, and pastimes of the Lord and focus on the same. That is the next stage. If we move little further, then the third type is dhyan. That is to contemplate on the form, name of the Lord. And the fourth stage is dhruvanusmriti. So, continuously remembering or focusing on the name, form, and pastimes of the Lord. And this cannot be, if it's done more than 3 minutes, then it is called samadhi or trance. So, in this manner, there are types of remembrance, but for your information, so sometimes we do remember, but continuous remembrance or eternal remembrance can happen only with the exalted devotees of the Lord. And if our heart is completely purified, but if our not able to remember, then it implies that our heart is not yet purified. So we need to perform devotional service like serving others, listening, etc., to purify our heart. And who is the idol for Smaran? That is Sri Prahlad Maharaj, who did this Smaran Bhakti. He never chanted the names of the Lord. In the kingdom of Hiranyakashipu, would have been he able to chant the holy names of the Lord? And he had only one thing, that is remembrance. And he always remembered the Lord. And he remembered the Lord and he attained the Lord. But when he was in the womb of Kayadu, he had heard about the pastimes of the Lord through the mouth of Narad Muni. That was the foundation of his remembrance. And because he heard it carefully, therefore he could understand or remember properly. So this remembrance, so in 9 limbs of bhakti, first is Shravan, that is listening, second is Kirtan, and the third is Smaran. And the third day of Navratri, who is worshipped? Chandraghanta, who personifies Smaran. So these are all linked. ओके, अब आगे और एक पॉइंट है. So there is another point. ये बात तो हमने गीता में कृष्ण ने बार-बार कहा कि भाई मन में मेरा स्मरण करो. Krishna has told in numerous times in Bhagavad Gita that you should remember me in your mind. But Arjun says that it's not possible to control or fix my mind. I can control the whole universe with Gandhi. So sometimes we remember the Lord sometimes, but if we
if we want to eternally remember, or if we want to fix our mind in remembrance, then she is giving us instruction that through bhajana kriya, through bhajan, we can form our remembrance, and that is the worship of Chandraghanta Mata, and that will be the actual devotional service to the goddess, to kill animals and to offer meat. This is all mental concoction. She is a mother, and she will never think that any living entity should be killed. But this foolish society, ignorant society, just for their sense gratification, they offer meat and liquor to the Lord Goddess. Ramakrishna Paramhans had a friend who was a devotee of Kali Devi, and he used to offer a goat to her. So Ramakrishna Paramhans was in the mode of goodness, and he tried to request him, but he never understood. So one day this person came to him and said that now I have stopped offering animals to Kali Devi, as you have been saying that for so many years that we should not do this. So Ramakrishna Paramahansa said, he said that you haven't stopped, but now you have no teeth. Now you're not able to eat the meat. That is why you stopped. So this is not the worship of Mata. It doesn't pleases her. It is just a hypocrisy of the world. And if you really want to worship her, then you should do smaran and fix our mind through bhajan kriya, that is to chant the holy names or sing the glories of the Lord. And how are we supposed to do bhajan kriya? That is through the medium of the limbs of devotional service. So she has 10 arms, and what does they portray? So with one hand she is in smaran, the 9 hands we should perform the 9 limbs of devotional service, and all her hands are busy with some work. So she is showing or portraying that we should remember, but we should remember with the 9 limbs of devotional service towards the Lord. So that 9 limbs of devotional service, the focus should be to remember the Lord. So if I clarify it more, with remembrance we should have 9 limbs of devotional service, or with the 9 limbs of devotional service we should have remembrance. So they should be connected. Listening and remembering should be connected. Kirtan should be with remembrance. Dasyam, Sakyam, etc. should be connected or linked with remembrance or smaranam. And this is what Chandraghanta Mata is portraying and teaching us. And she has 10 arms, and they signify, it means that we should completely perform the 9 limbs of devotional service. And how? So sometimes people say that I will just listen to the pastimes of the Lord or Katha, and some say that I will just do the chanting. But what does Chandraghanta Mata portray? That we should perform all the 9 limbs of devotional service. And she is riding a lion, and she is ready
to fight. So she's saying that performing devotional service towards the Lord is that we should be ready to fight a battle. Tired and laziness, we cannot be able to perform devotional service. Sometimes people say that we are not able to do it, but it is actually they don't want to do it. As a soldier, get ready. Similarly, a devotee should get ready to do the chanting of the holy names of the Lord. Devotional service is a form of love towards the Lord, but we will have a fight with the Maya and the material energies of the world. The direction in which this world is going, we are walking in the opposite direction. So it is a fight. So while others are moving towards sense gratification, and we are desiring to progress in the opposite direction by performing devotional service towards the Lord. So in this way, she inspires us. So the next Devi is Kushmanda. So before we proceed about her, so let's have a small infomercial and then we will progress further. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna. So बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान लाल गोविंद जी। बहुत ही सुंदर आज इस तृतीय दिवसीय कथा में हम इस तृतीय देवी जो कि जिनका नाम चंद्र घंटा है और इनकी बहुत ही सुंदर हमें यहाँ पर कथा श्रवण करने को मिली। और शुरुआत में बहुत ही सुंदर हमने जाना कि ये दुर्गा माता कौन है। आपके मुखारविंद से हमें समझ में आया कि दुर्गा माता और कुछ नहीं परंतु ये श्रीमती राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कभी विष्णु में परिवर्तित होते हैं, कभी उनसे शिव जी का प्राकट्य होता है, अनेक अनेक बलराम जी ऐसे विस्तार होते हैं। उनमें से एक जैसे माता सीता है, रुक्मणी है, ऐसे दुर्गा है। तो इट इज नन अदर देन एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो दिस इज समथिंग वंडरफुल दैट वी केम टू नो प्रभु जी। और बहुत ही सुंदर नारद पंचरात्र विधि के उन श्लोकों से आपने इसको आपने उसको बहुत ही सुंदर बताया और बताया हमें कि मतलब ये इसको बहुत ही सुंदर इस श्लोकों को माध्यम से आपने यह बताया हमें। और उसी के साथ मत्स्य पुराण के उन श्लोक से भी हमें यह जानने को मिला कि कैसे श्रीमती राधा रानी के ही ये एक्सपेंशन है अलग अलग। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें जानने को मिला दुर्गा माता कौन है। और उसी के पश्चात बहुत ही सुंदर चंद्र घंटा माता जिनकी हम कथा यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने जाना कि चंद्र घंटा माता जिनकी जो भजन क्रिया तथा स्मरण भक्ति को प्रतिपादित करते हैं। और स्मरण भक्ति में हमने जाना कि प्रहलाद महाराज इज द आइडल ऑफ दैट पर्टिकुलर भक्ति। तो उसके साथ साथ भजन क्रिया बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें आज इस कथा में जानने को मिला। और भजन क्रिया के अंतर्गत कैसे भजन के द्वारा हम ये जो त्रिशराधीन है और ये जो स्मरण भक्ति है दैट इज अगेन थर्ड तीसरी भक्ति है। प्रथम भक्ति जो कि श्रवण है, स्मरण, कीर्तन, स्मरण, इन तीनों भक्ति के द्वारा यहाँ पर हमने जो जाना कि स्मरण भक्ति भी तीसरा चरण है इस नवदा भक्ति का। और इस तीसरी देवी माता का हमने आज आपके मुखारविंद से श्रवण किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आज इस भागवत कथा में हमें जानने को मिला इस प्रकार की 9 देवियों के विषय में।
सो वंस अगेन थैंक यू। और बहुत ही सुंदर आज तृतीय दिवस है भागवत कथा का। तो आज हम चाहते हैं कि हम भी गौ माता के दर्शन करें। बहुत दिन हो चुके हैं, हमारी श्री राधा गोविंद गौशाला के दर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि भाई भक्त लोग कहते हैं कि हमारे गौ माता के दर्शन भी कराइए हमें प्लीज। सो यस, वंस अगेन पुनः हमें यहाँ पर यह अवसर प्राप्त हुआ है कि श्री राधा गोविंद गौशाला की इस गौ माता की सुंदर सेवा जो कि हमारे पटेल फैमिली के द्वारा की जा रही है इस भागवत कथा के माध्यम से, तो पुनः हमें उनके दर्शन कराने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम विशेष धन्यवाद करते हैं हमारे इस यजमान परिवार का, हमारे डॉक्टर चंदी भाई तथा मधु माता जी, कृष्ण माता जी, अदिति माता जी, जानकी माता जी, कि जिन्होंने यहाँ पर इस सुंदर सहयोग किया है, जिसके फलस्वरूप हमें बहुत ही सुंदर सेवा करने का अवसर मिला है। और ऐसे पावन पर्व जो कि नवरात्रि का समय है, उसमें इन 9 देवियों की गुणावली को आस्वादन करने का विशेष हम सबको समय मिला है। आप सबके प्रभु जी के सानिध्य में बैठकर इसे श्रवण करने का अवसर मिला है, तो वेरी ग्रेटफुल। और बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन इस पटेल फैमिली को कि जिन्होंने ये सुंदर संकल्प किया और इस प्रकार भागवत कथा का आयोजन किया, जिससे कि हम सब गौ माता की सेवा कर पा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर यह सुंदर कथा भी श्रवण कर पा रहे हैं। So really grateful. Thank you so much to Patel family, and we hope and pray that you keep serving this wonderful Go Matas. हमारे कृष्ण माता जी जो ऑलरेडी हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला के मनोरथ उनकी सेवा में संलग्न है। She is already engaged in she has already adopted one of the calf in our गौशाला whom she is serving regularly basis. तो ऐसे बहुत सारे भक्त हमारे इस अमृत चर्चा परिवार के हैं जो कि प्रत्येक गाय की सेवा में संलग्न है, और हम चाहते हैं कि आप भी इसी प्रकार इस प्रकार सेवा में लगे और अपने जीवन में और अधिक कुछ ना करें, परंतु एक गौ माता की सेवा करने का संकल्प अवश्य कीजिए, जिससे कि इस प्रकार हम गौ माता की सेवा कर सके और उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए कुछ कर सके, जिससे कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। हम आशा करते हैं कि आप भी इसी प्रकार हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमारी प्यारी श्री राधा गोविंद गौशाला की गौ माता की सेवा करें और उनसे कुछ आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कि हमें भजन में बल मिले। तो once again thank you so much. Or yes, if you want to be a part of this seva, then you can contact us in our number where you can get the information regarding such a sevas. तो इसके लिए आप हमें हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला के कॉन्टैक्ट नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं if you want to do some sort of seva to Shri Radha Govind Goswami, where you can also adopt Go Matas, or you can serve her on a monthly basis, and there are various sevas available. So you can approach us on 9+91 756 754 5555, जहाँ पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं इस प्रकार की सेवाओं के लिए। और साथ ही साथ आप हमें sevaperfect@gmail.com पर भी इसे मेल कर सकते हैं, और जो हमारी वेबसाइट है which is www.perfectseva.com, जहाँ पर जाकर इस गतिविधियों को आप देख सकते हैं, इस सेवाओं को अलग अलग देख सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप इस प्रकार की सेवा में जुड़िए। और बहुत ही सुंदर हम यहाँ पर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत ही सुंदर एक कार्तिक मंथ प्रारंभ हो रहा है बहुत ही जल्द। तो उनके उपलक्ष्य में भी एक बहुत ही सुंदर भागवत कथा, जिसका फ्लायर इतना कलरफुल है, क्योंकि ये महीना इतना कलरफुल है कार्तिक, जिसमें भगवान ने अनेक अनेक लीलाओं की है और अनेक अनेक पास्ट टाइम से भगवान के, जो कि स्मरण करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, मनन करने योग्य है। तो यस, ये जो हमारे 340वीं भागवत कथा होगी, जो कि हमारे मेलबोर्न से स्थित डिवोटीज हैं, हमारे देव फैमिली, हमारे नलिनी माता जी और उनके परिवार के द्वारा इसमें सहयोग किया है। और इस कथा को हम श्रवण करेंगे, जिसका टाइटल ही आप देख सकते हैं, एसेंस ऑफ दामोदर, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पास्ट टाइम्स व्हिच हैज बीन अकर्ड इन दिस पर्टिकुलर मंथ। तो उस सब पास्ट टाइम्स को कंपाइल किया जाएगा और प्रभु जी के श्रीमुख से पुनः हमें यहाँ पर अवसर मिलेगा कि हम इस दामोदर मास में भगवान दामोदर की लीला, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ये दामोदर, DAMODAR, ओके। तो डी से कौन सी लीला है, ए से कौन सी लीला है, ए। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर एक ट्विस्ट टाइप है हमारे लिए, क्वेश्चन है ये
कौन सी पास टाइम्स होने वाले हैं, तो विल बी ईगर टू हियर दैट एज वेल। और ये भागवत कथा आने वाली 14 से लेकर आने वाली 9 तारीख से लेकर 15 तारीख ये भारत के लिए है मॉर्निंग में, और यूएस के लिए ये होगी 8 तारीख से लेकर 14 तारीख इवनिंग में। तो ये आने वाली भागवत कथा है, और समय रहेगा भारत का सुबह 5:30 से लेकर 8 AM, और यूएसए के लिए रात को 8 से लेकर 10:30 बजे, और हमारे जो ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न का ये टाइम रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक। इस प्रकार ये कार्यक्रम होने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज आप अवश्य इसमें जुड़िए, और यदि कुछ भी ना समझ में आया हो तो यहाँ पर नंबर भी दिया गया है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको ये फ्लायर भेज सके और आप इससे शेयर कर सके, जिससे कि हम ये जो कार्तिक महीने का ये सुंदर अवसर है, फेस्टिवल है, उसको साथ में बैठकर सुने, श्रवण करें, स्मरण करें, और भगवान का चिंतन करें। क्योंकि दामोदर मंथ है, उसे बोनस मंथ कहा जाता है हमारे इस्कॉन के कैलेंडर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस महीने में एक माला करने का फल आता है, वो एक माला, 1 माला इज कैलकुलेटेड एज 1000 माला, यानी एक माला भी इतनी अगर कर लेते हैं तो मतलब दैट इज टू मच। तो हालांकि जो 16 करते हैं उनको तो 16 करनी चाहिए, ये तो उन लोगों को प्रेरित करने के लिए कि आप एक माला कीजिए, जिससे कि ना आपको 1000 माला का फल मिले। परंतु यह सुंदर अवसर हमारे बीच में आ रहा है, दामोदर महीना। आप सबसे निवेदन है पुनः हमारे साथ में अवश्य जुड़िएगा। और आइए निवेदन करते हैं इस लाल गोविंद प्रभु जी से कि आज इस जो द्वितीय दिवस का द्वितीय सत्र है आप मुझे श्रवण कराए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुरा संपूर्ण कलशम, सुरा संपूर्ण कलशम, रुधिराप्लुत में वच, दधाना हस्तपदभ्याभ्याम्, दधाना हस्तपदाभ्यायाम्, कुष्मांडा शुभदास्तु मे, कुष्मांडा शुभदास्तु मे। नवरात्रि में, So during the Navratri, चतुर्थ दिन, the fourth day, दुर्गा माता के Durga Mata's कुष्मांडा स्वरूप की Kushmanda form is worshipped or venerated. कुष्मांडा माता के विषय में कहते हैं, And it is said about her, सुरा संपूर्ण कलशम, Sura Sampurna Kalasham. It means in her hands, एक कलश है, she has a pot, उस कलश में पूरा कलश अमृत से and भरा हुआ है। it's filled with nectar or elixir. संपूर्ण कलशम, जिसके कर कमल में So in her अमृत hands, से भरा हुआ she पूरा has a कलश है, pot filled with और nectar, दूसरे हाथ में रुधिर, and on other hand, और दूसरा हाथ she has रक्त से सने हुए हथियार से भरा हुआ है। filled एक is हाथ में अमृत का in घड़ा, other hand दूसरे she हाथ में has हथियार, दधाना weapons हस्त that पद्भ्याम, have blood on them. अपने हाथों में इस प्रकार से अमृत And in this और way, हथियार रखने वाली she carries श्री कुष्मांडा weapons and शुभदास्तु nectar में in her hands, कुष्मांडा देवी मुझ पर कृपा करे। and let she be merciful on me. सो नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है। So the fourth अच्छा, day, Kushmanda Mata आप इस is श्लोक में देख सकते हैं, worshipped, इनका नाम है कुष्मांडा। कुष्मांडा so her का name अर्थ is यदि किया Kushmanda. जाए And if we व्याकरण want के to अनुसार,
understand the meaning of her name according to the grammar, then she has 3 words, that is ku, sh and under. कु श आधा और अंड. कु का अर्थ होता है छोटा. So the ku means small or श subtle. माने ऊर्जा, माने श माने स्माइल, श माने हंसी. Sh means और happiness, अंडा a माने smile, ब्रह्मांड. and under means कु the whole श material श universe, अंड. Brahmand. तो कु माने छोटा, So श ku माने means हंसी. small अपनी and छोटी सी sh हंसी means से, smile. With मतलब small अपनी एक smile, स्माइल मात्र से with जो just पूरे a small ब्रह्मांड का smile, निर्माण कर देती है, she can इसलिए create the इसे whole universe. कुष्मांडा कहा जाता है. That is why she is called Kushmanda. अपनी मंद मंद हंसी से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली कुष्मांडा देवी. मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगती है. So I like one thing about इतने her, बड़े जगत का that निर्माण करती हैं. she creates the ये whole कितना material बड़ा काम, universe. ये It's such माता a जी कितना great बड़ा काम करती हैं. पूरा job दुनिया का निर्माण that she करती हैं. performed. She लेकिन creates the कैसे? whole material कुश universe, माने but how? हंसते हुए, Kush means मुस्कुराते with हुए. smile on her face, like और कुछ लोगों के smilingly. घर पर भी माता ये And काम करती हैं, some people's लेकिन home मुंह बिगाड़ mothers कर. work, but they do ये it माता जी कुष्मांडा पूरा with it. ब्रह्मांड निर्माण करती है हंसते हंसते. और कुछ लोगों के घर with पर distress माताएं on their faces. घर का काम तो करती हैं लेकिन So they चिल्लाते work, हुए. but they घर पर ये shout, बिगड़ गया है, यहाँ पर ये this ठीक is नहीं है, not यहाँ पर working, ये this सब is प्रॉब्लम not है, वैसा proper, प्रॉब्लम है. there is this काम तो problem in करती. that. भारत They work. भारतवर्ष की नारी The काम में पीछे नहीं हटती, women of लेकिन Bharatvarsh, उनको they बोलना बहुत always होता है. work, but they speak a lot रसोई घर as well. में रोटी बनाते बनाते So बोलती while रहेगी कि ये कुछ काम के नहीं है, ऐसा है वैसा है, समय से भोजन करने working नहीं बैठती in है, the कुछ kitchen, बुद्धि नहीं है, ये है she वो है. हैं? keeps on speaking. काम तो करेगी लेकिन. She will work, तो कुष्मांडा देवी से पहली but सीख तो मुझे ये दिखाई first दे we रही should है learn from कि her that we should अंड do मतलब our जो work ब्रह्मांड का with निर्माण smile करती on है, our कैसे? face. That हंसते she हुए. creates the whole आप universe लोग with a ब्रह्मांड का smile. निर्माण मत करो, लेकिन ब्रह्मांड जैसी रोटी का तो निर्माण करो, रोज करते हो ना. तो गोल रोटी, पहले तो रोटी गोल बनाइएगा. So आप लोग रोटी बनाते first हो of तो all, भारत का you मैप should make बनाते हो, बेचारे the पतियों को पता नहीं chapati चलता, round. आपको कुछ बोलते नहीं है, बेचारे खा जाते हैं. Husbands खाते वक्त don't say रोटी खाते anything. वक्त बेचारे कुछ बोलते नहीं है. They don't sit utter a word. लेकिन मैं आपके पतियों की ओर से मैं कुछ बोलता हूँ कि भाई रोटी I'm गोल speaking बनाइएगा, on their behalf that you should फुलका make the रोटी chapati बनाइएगा, round ताकि ये बेचारे अच्छे so सेहतमंद that बने रहे. they can be healthy, और हंसते हुए. and do it with a smile जैसे on कि your मैंने एक face. दिन पूछा था ना कि रोज As I सुबह asked उठकर एक one day, प्रश्न का सामना करना पड़ता है. we need to face आज one भी question सामना every हुआ. day. So today तो मैं also I had to कुष्मांडा face माता this का स्मरण question. कर रहा था. So I was कल रात remembering को आज Kushmanda सुबह, Mata. क्योंकि कुछ बोलना होता है तो स्मरण. तो उसी समय वो प्रश्न And का at that सामना time, हुआ. I सुबह had to सुबह face that question आज in the क्या morning. खाओगे. What are what are you going to eat today? तो मैं कुष्मांडा माता मेरे मन में चल रही थी, ये सब बातें स्मरण. मैंने And कहा I तू was हंसते remembering हुए Kushmanda. जहर भी खिला देगी ना And she said तो that लाल गोविंद दास खा लेगा. तो if वो you offer हंसते me हुए. poison with this smiling face, then I कोई will आप जहर नहीं eat खाने it. वाले हो, आप जहर खाने वाले दिखाई देते हो. लेकिन कहने का अर्थ यह है. So in short, देखो ये माता के ये स्वरूप Kushmanda. जो है हमको So this is the कुछ सीख form देते of हैं, the mother, बहुत सीखा जाता and we have so much to learn from them. है. ऐसा कहते हैं कि जब ये सृष्टि And नहीं it थी is तो said that भगवान की when जब this इच्छा material हुई, universe was non-existent, and the Lord भगवान has का this काम क्या था, desire, एक तो प्रेम करना. भगवान श्री कृष्ण he प्रेम had करने के अलावा only और one कुछ thing. न जानते हैं न कुछ He करते हैं. loves, and he और knows जब इस nothing संसार beyond के that कई love. सारे जीवों को ये इच्छा हुई कि हम भगवान And से when दूर हो so जाएं, दूर many रहे, भगवान living क्या entities करते हैं? had this desire to be away from the Lord, भगवान then what is he अपने supposed एक to do? इशारे से By सूर्य को प्रकट करते हुए the आदेश देते sign, हैं और he एक साथ gives का इस ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं. an order to the Devi, and she कुष्मांडा देवी का creates this रूप material कैसा है? universe. And how is her ये form? अष्टभुजा वाली है. She has इसके 8 पहले चंद्रघंटा arms. 10 भुजा.
So Chandraghanta had 10 arms. Kushmanda Devi has 8 arms. Let me zoom it. You can count. Out of those, in 7, she has the pot, then she has a bow, arrow, chakra, that is this, and the club, and the neck pot, and the 8th hand, she has the chanting bead. So the chanting bead is everywhere. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि दुर्गा देवी के सारे स्वरूप में माला है और ये डांडिया. All her forms have chanting beads, but all these people who go and dance on Garba, and they dance on Bollywood songs. So she chants the names of the Lord. So we should do the Ras or Garba, Kirtan, etc. with the holy names of the Lord. Even Goddess Durga might be thinking that. Rather than attacking the demons, I should attack them, these people who dance on Dandiya. And when she loses her cool, although she has all these weapons for demons, but she will start attacking all these. That you don't even know how to make her happy or satisfied. She just keep on dancing on the songs of Hollywood, Bollywood, etc. So she has 8 arms, and she wears red color sari, and she also is riding a lion. So this lion is better than the previous one. So she wears red clothes or sari, and she rides on the lion, and she likes kumde, and that meaning for that is the pumpkin. So in Iskcon we eat the pumpkin a lot, and she likes the pumpkin a lot, and she likes bottle gourd as well, and she likes malpua as well. And it is said that she likes malpua, kaddu, that is pumpkin, or bottle gourd, and she gets satisfied, and she fulfills your desire. And where does she stays? Where is she situated? So there is a planet in the sun planet. So the sun is so bright that we cannot even see or look into him, but she stays inside the sun planet. There is a planet there, and that means that she has the tolerance to tolerate the effulgence or heat of the sun, and that is why her body is effulgent like sun, and she shines like sun. So if we offer her pumpkin, bottle gourd, or malpua, then she blesses us and nourishes or develops our brain. And what is buddhi?
That is हम जो निर्णय करते हैं, the decision taking कौन से शेयर लेने हैं, which share we should buy. चूहे बन जाते हैं बेचारे, तो मतलब डिसीजन जो भी आप, So whatever decision we have to take is taken with our intelligence. So she nourishes or nurtures our intelligence. So this is the external introduction or form, description of Kushmanda Mata, but the internal form is this. भूतेषु पाद सेवन अनर्थ निवृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुष्मांडा माता का तात्विक स्वरूप है पाद सेवन। So her internal form is Padsevanam and Anarth Nivriti. She epitomizes Padsevanam, that is to serve the lotus feet of the Lord. Why? Because on the fourth day Kushmanda is worshipped, and the fourth limb of bhakti or devotional service towards the Lord is Padasevanam. So, in conclusion, she signifies or denotes Padasevanam, the limb of bhakti, and the ideal for the same is Goddess Lakshmi. What she does is she constantly serves the lotus feet of Lord Sri Vishnu, and she massages his feet constantly. And Kushmanda Mata, if we have to satisfy or make her happy, that we should also serve the Lord like Lakshmi ji. But you will say, Lakshmi has Vishnu to do the Pasevna. So let's cancel the program. So please tell me something else. So please understand carefully that the fourth limb of the bhakti is Padasevanam. And practically, what is Padasevanam for us? Lakshmi ji can serve the lotus feet of the Lord by massaging his feet. That is Padasevanam. But actual meaning of Padasevanam is what? And how Kushmanda Mata helps us. Listen carefully. So you need to count. So first, through our body, serving the Lord is considered as Padasevanam, or serving the lotus feet of the Lord. So we're just not massaging the feet, but we also need to offer bhoga to the Lord. So Padsevna means serving the Lord with all our limbs and all the limbs of the Lord. So the first meaning is the lotus feet of the Lord. That means Padasevanam. But there is another meaning. What is the actual feet of the Lord, and or who resides in the lotus feet of the Lord? The exalted devotees of the Lord are at the lotus feet of the Lord, and that is why in Iskcon we call our Acharyas as Prabhupada. So we call Jagat Guru Srila Prabhupada. So
who is in the shelter of the lotus feet. कहते हैं Even Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is called Vishnupad. ठीक है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को क्या Gopal कहते Krishna हैं? Goswami Maharaj is Bhagavat referred to Pad. as Bhagvat Pad. राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को क्या Radha कहते हैं? Govind Goswami कृष्ण Maharaj is पाद। called Krishna Pad. ये सब आचार्यों की उपाधियां हैं। So these are the इसका अर्थ क्या हुआ? names भगवान of के चरण तो उनके or पाद adjectives पद्म है। of the devotees of the Lord. साथ ही साथ So, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं so the exalted devotees of the Lord ही are माने जाते हैं। also considered as तो the पाद lotus feet सेवन of the भक्ति का Lord. अर्थ क्या हुआ? So what is the पहला meaning अर्थ of Padasevan भगवान के Bhakti? चरणों की सेवा। First, to serve the पाद lotus feet of the सेवन का Lord. दूसरा अर्थ हुआ And second meaning भगवान is के शुद्ध भक्तों की सेवा। to serve the exalted devotees of the Lord. ये दो हुआ और आगे सुनिए। So further, भगवान if की I शिव add, मूर्ति का दर्शन ये भी पाद सेवन है। even to see the भगवान के अर्च विग्रह मूर्ति form का दर्शन पाद or the सेवन है। Archavigraha deity of the Lord is also considered as Padasevanam. भगवान के And the अर्च fourth विग्रह is को स्पर्श करना। to touch कई भक्तों the को ये सौभाग्य मिलता है deities अपने of घर the पर Lord, लड्डू गोपाल को स्पर्श करना या मंदिरों में to भगवान के touch the प्राण lotus, प्रतिष्ठित विग्रह को the स्पर्श करना। तो deity भगवान of the का Lord in स्पर्श form of उसको Laddu स्पर्श Gopal or करना, other ये deities in the पाद temple, सेवन भक्ति है। that is also इसका considered as साइंटिफिक रीजन है, ये सब Padasevanam. वर्गीकरण किया गया है। It has been proved फिर scientifically भगवान की and परिक्रमा करना कौन categorized, सी भक्ति मुझे बताइए। and to circumvallate गिरिराज परिक्रमा करते हैं ना हम लोग, the Lord. गोवर्धन परिक्रमा, गिरिराज What is परिक्रमा, that? चित्रकूट, कामदगिरी, ये सब What type परिक्रमा of करते bhakti हैं। is that? कौन सी? So कहाँ लिखा है circumvallating मुझे बताइए। Giri Govardhan, etc. क्या श्रवण भक्ति Where में is ये it आता है? mentioned? Does it comes कीर्तन in भक्ति में? listening or शास्त्र में तो kirtan? नवदा भक्ति है ना, नवदा So भक्ति, नौ गुना Shastra भक्ति, has नौ प्रकार की 9 भक्ति, Nada उसका Bhakti, परिक्रमा that 9 करवा limbs करके of मुझे bhakti. बताइए। But where it is तो mentioned भक्ति महावीर about के थे परिक्रमा circumvallation. करवा माटे। तो फिर सिद्धांत ये समझना But चाहिए we need to कि understand the परिक्रमा philosophy ये पाद that सेवन भक्ति है। circumvallating ये सब the concept Lord clear होनी चाहिए। is Padasevanam. And we should have this गिरिराज concept परिक्रमा, clear. वृंदावन परिक्रमा, मतलब हम गौड़ीय भक्तों को खास करके या And हमारा our प्रेम पीवरावेला जो भक्त Gaudiya तो जवाब हो devotee and भाई ये the गप्पा devotee who नहीं है, listens सीधा to जवाब my होना katha चाहिए। should पाद have this सेवन answer भक्ति that है ये, what नवदा are you भक्ति का doing? चौथा अंग है So ये, we are doing ठीक है। Padasevanam while तो circumvallating, परिक्रमा and पाद it is the सेवन fourth भक्ति। limb of bhakti or आपने devotional देखा service towards the इस्कॉन Lord. मंदिर में ही ये होता है। So in Iskcon जो Temple, लोग it so इस्कॉन मंदिर happens, में जाते हैं ना, so हमारे भाई those है ना who प्रभु, वो तो go to है Iskcon जो Temple, मधुसूदन प्रभु रेगुलर जाते हैं। कल तो कार में ही आधी कथा सुने, वो मैं उसको देख रहा था। और भी आप में से कई सारे लोग जाते होंगे। रोज सुबह गुरु पूजा होती है, राइट? every morning they have Guru वंदे Puja. गुरु श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म है? तो गुरु पूजा में आपने देखा होगा, So you might have observed और बाद में प्रभुपाद जी को लेकर चलते before and after हैं। the भगवान के veneration, altar से they प्रभुपाद को उठाते take हैं और फिर Prabhupada प्रभुपाद ji की जो from the बड़ी altar मूर्ति है वहां पर रखते हैं। and they तो उस समय establish क्या होता है, near the सब लोग bigger प्रभुपाद जी के पीछे deity पीछे चलते or हैं। आपने देखा होगा डिवोटी जो a होते हैं form ना, of the टोली Lord, पड़ी जाए, अरे and भाई पाछड़ पाछड़ all the पाछड़। devotees follow. वृंदावन में तो ये बहुत लंबा होता है। वृंदावन And में प्रभुपाद जी को रोज in Vrindavan it प्रभुपाद is जी को ऐसे उठा कर चलते हैं, भक्त उसके पीछे पीछे चलते हैं। longer, but तो otherwise it's मूर्ति shorter. के So, पीछे पीछे they, चलना का so मतलब just क्या है? आपको कोई पूछे following भक्ति का the कोई भी तत्व प्रमाणित होना चाहिए। the form, where is प्रभुपाद it जी की mentioned? मूर्ति लेकर कोई चल रहा है तो चलने So देना, if आप तो somebody उसके is पीछे चल रहे हो, carrying कौन सी Prabhupada भक्ति है? ji's ये deity, है then why are you अनुव्रजम। following इस भक्ति का them? नाम है That bhakti अनुव्रजम। is called Anuvrajam. महाजनो येन गतः स्पंथा, That is महाजन to के पीछे follow चलना ये the भक्ति है, great और ये devotees of पाद the Lord सेवन is भक्ति के अंतर्गत आता है। a type of bhakti, and it comes under मूर्ति के Padasevanam. पीछे चलना ये पाद सेवन भक्ति To है। follow the deity is under नवरात्रि में क्या Padasevanam. है, वो डोकिया पेरी लीधा होय, डांडिया ले लीधा होय, नवरात्रि करेंगे, और 4-5 फिल्म ना गीत गाइन आविन सुई जाए, नवरात्रि किया। People get so excited सच्ची that we'll नवरात्रि do किया है। Navratri and they just go कीर्तन and करना, dance on the नाचना अच्छी बात है, Bollywood लेकिन songs and they come back and sleep. philosophical point पता होना But चाहिए। this is the true celebration of और Navratri. आगे We पाद should सेवन have भक्ति
clarity in philosophy, to stay in the temple of the Lord is also considered as Pada Sevanam. Sometimes we should take time and make effort to stay in the temple, or we should stay at the home of a devotee. We should eat and drink at their home, even if we are not hungry or thirsty. Why? Because to live in the temple that is the home of the Lord or the devotee of the Lord is Pada Sevanam. Further, in Pada Sevanam, all the holy places of the Lord, that is Jagannath Puri, Dwarika, etc., is also considered as Pada Sevanam. So visiting these holy places is Pada Sevanam. As all the incarnation, the Lord Krishna is himself the root. So all the holy places that are connected to Lord Shri Krishna are more glorious. So we have so many holy places, as we have so many incarnations, but the root is Lord Shri Krishna. Similarly, the holy places are innumerous, but the ones that are related to Lord Shri Krishna are more glorious. So we need to set our priority and visit the places accordingly. So going to the holy places is Pada Sevanam. To take the holy dip in the holy rivers is also considered as Pada Sevanam. On the banks of, sitting on the banks of holy rivers like Ganga, Yamuna is also Pada Sevanam. To stay near the holy rivers is also Pada Sevanam. And finally, to serve Tulsi Maharani is also considered as Pada Sevanam. So in this manner, these are the forms of Pada Sevanam. So she also signifies Anartha Nivritti. So the fourth stage of devotional service is Anartha Nivritti, which is epitomized by her. So in comparison, we can have Shraddha and Sadhu and Bhajan Kriya, etc. But Anartha Nivritti is such a stage where it takes huge effort and time to cover the stage. So now her role is signified or glorified here. We all are householders and we have so much innumerous work and responsibilities. So, but if we have the mercy of Kushmanda Mata, by staying in our household life, by performing Pada Sevana Bhakti, we can cross this Anartha Nivritti stage and we can have all the distresses and obstacles in our devotional service be removed by her mercy. So we have heard the glories of Kushmanda Mata. So we will conclude today here and we'll meet tomorrow again with new thought. You have been listening with so much patience and love. I thank you all. I especially want to thank to Madhuben Patel, Jayantibai Patel, and their daughter Krishna Patel, and their whole family who have organized this Bhagvatam Katha. I thank you all. By your mercy and support, we are listening this Bhagvatam Katha, the glories of Durga Mata in the pious period of Navratri. So let's conclude the session with Jai Jaikar, the third day of this Bhagvatam Katha. राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री कृष्ण